क्वेश्चन आप लोगों से लूंगा। मेरी टीम ने बोला सर आप यूट्यूब वालों के मत लो, इनके लो। मैंने कहा ठीक है, मैं तो भाई कोई मुझे अच्छा सजेशन लेता है मैं ठक एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अच्छा फीडबैक, अच्छा सजेशन, वो किसी से भी आए। SSB नाइट्स विद YMU इज बिगर देन कॉमेडी नाइट विद कपिल। वो तो मेरी लाइव क्लास में होता है, इतने हंसने का काम होता है हमारी क्लास में, पूछो मत। चलो, सो फ्रेंड्स, here we are today. What a pleasure to see you all, my students, on Zoom, who are here. This is an in-house discussion with a broadcast outside. Technology has made it possible. Technology has made it possible for us to be discussing something in-house with my team, but the whole world can watch it. They can see what is happening and take part also. So we already have a lot of learners who are part of our, watching this live on YouTube. And so what I'll do is, I want a session with energy today. ठीक है, वी आर ऑल डिफेंस एस्पायरेंट्स, कोशिश कर रहे हैं हम जिंदगी बदले आप लोगों की, और कुछ नया हम आपको सिखाएं. सो टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे, लेफ्टिनेंट कर्नल सत्यन राठौड़. लेफ्टिनेंट कर्नल सत्यन राठौड़, ही इज ए आर्टिलरी ऑफिसर, तोपखाना. ठीक है, ही इज एन आर्टिलरी ऑफिसर. ही इज फ्रॉम सैनिक स्कूल बालाचड़ी, जामनगर, गुजरात. ठीक है, तो इज अ प्रोडक्ट ऑफ सैनिक स्कूल, एंड लाइक ऑल सैनिक स्कूल, पहले जाओ स्कूल सैनिक स्कूल, और सैनिक स्कूल से एनडीए से आईएमए से ही वेंट इनटू आर्टिलरी, गनर बोलते हैं. सो ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ सैनिक स्कूल एंड प्रोडक्ट ऑफ एनडीए की बात करेंगे इनसे कि एनडीए का कैसा रहा आपका टेन्योर, हाउ डिड यू क्रैक एनडीए एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस. And then the best part is why he's here with us. He's here with us because he was GTO in 17 SSB Bangalore, GTO in 34 SSB Allahabad, and then he was an instructor in DIPR, जो दिल्ली में जो पढ़ाते हैं, जो सिलेबस बनाते हैं, जो डिस्कस करते हैं, जो रिसर्च करते हैं कि GTO को क्या पढ़ाना चाहिए, क्या, what is the qualities the Army and Navy Air Force requires, and what changes. एंड इनकी खास बात क्या है, ही वॉज पार्ट ऑफ दैट, ये उस स्टडी टीम में थे जब ये सिस्टम चेंज हुआ असेसमेंट का, जब स्क्रीनिंग सिस्टम आया, और इसमें ही वॉज वन ऑफ दोज हु वाज पायनियर इन दैट रिसर्च दैट टुक प्लेस, दैट डिसीजन देन व्हेन इट वाज टेकन. He in his career in the army, then he left the army with about 22 years service, and then he's a successful entrepreneur. He's worked in various industries, so he's successful in military, successful out of military also, in uniform, out of uniform also. So now we have almost 160 plus on YouTube, and of course these two batches of ours are here. This children of BOCC and BOAC, they are also, they will just grow 60 plus here. So we are more than 200, and this figure will now keep increasing as people get notification and they finish their dinner. अब क्या करेंगे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरे से आप लोग रोज सुनते हैं मेरी बातें हैं, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन तुम मेरी वीडियो नहीं देख रहे या कुछ नहीं कर रहे. और आज क्या है, 6 फरवरी है, 6 फरवरी नौशेरा डे, मेरी यूनिट का बैटल ऑनर डे. और आज मैंने बहुत धाकड़ वीडियो डाली है, और ट्विटर पे पूरा कैंपेन चल रहा है ब्रिगेडियर उस्मान की लाइफ के बारे में, है ना. सो वो भी चल रहा है. तो टुडे 6 फरवरी द नौशेरा डे, which is battle honor of so many units, and on this day Nayak Jadunath Singh of 1 Rajput, which is now 4 guards, he got the Paramveer Chakra posthumous. So he was killed in action, he was KIA in battle of Naushera. So we remember him, a great hero of India. Also those who may not have got awards, but who died fighting for an independent India. And we had a leader like Brigadier Usman, who decided not to go to Pakistan Army. Even Jinnah put pressure on him कि अरे इधर आओ भाईजान, यहाँ हम आपको चीफ बनाएंगे पाकिस्तान आर्मी का. ऐसे नहीं, my motherland is India, he is from UP, how could I go to Pakistan? So he stayed here, fought for India, and senior most officer to have ever been killed in operations, killed in action. He of course died in the battle of Jhangad on 3rd July 1948, 3rd July. And उन्होंने कसम खाई थी, जब तक झांगड़ को कैप्चर नहीं करूंगा, I will sleep on a mat. ये फैक्ट है.
As a brigadier, he was चटाई पे सोता था ठंड में, चारपाई पे नहीं सोता था, बिकॉज ने कसम खाई थी. वो ग्रेट लीडर. बहुत कहानियां हमने सुनी है उनकी, उनके बारे में लोगों ने लिखा है किस प्रकार की उनकी फितरत थी, कैसे लीडर थे वो. सो यू ऑल कैन बिकम ब्रिगेडियर उस्मान. ठीक है. सो विद दैट नोट आई विल वेलकम कर्नल सत्यन राठौर. एंड पहले आई रिक्वेस्ट यू टू say about your NDA and all, and then you can start talk about SSB and what are the qualities required and whatever, and then take their questions. So over to you, Colonel Satyan Rathod. Thank you, General Mor. Hi, good evening, everyone. I am Colonel Satyan Rathod. Most of the things have been covered by General Mor. If I recollect my days, when I was in Sainik School, then I was in NDA for 3 years, IMF for 1 year. Those days came as a marked reflection when I joined SSB. And then I realized the importance of whatever I have learned in the school, whatever I had learned at NDA, and whatever I had learned at IMA. And it was coming back a full circle because I went from my SSB to Allahabad. I cleared SSB from Allahabad. And when I left the army, I was posted as a GTO at Allahabad. So that is how the whole life comes as a full circle. And life in NDA, yes, it is full of stories, full of excitement. And if I sit down to narrate, I think I will take the complete 1 hour session time and there will be nothing left for you. So I'll keep on sharing my experiences, my learnings with you as we proceed with the session. And I would prefer to allocate this time for all of you to ask your questions. And wherever I can fill in my experiences and my opinions, I think that would be a better way to reflect back on my journey of life. I hope, Janmo, that is okay. That is perfect. Hello. Hello. Yeah, that is perfect. But if you can just set the stage by कोई एक चीज जो आपकी NDA की याद है, कोई one small anecdote or a story about NDA. तो क्योंकि सारे बच्चे पहले वो सुनेंगे, then we will discuss the technical part of GTO assessing. Recording in progress. See, when I was studying Sainik School, Balachadi, though it's an English medium school, outside class, it was always, most of us were from Gujarat. So it was always Gujarati. And there I learned, when I was very, very apprehensive as to how will I pick up English. And when I joined NDA, so when you stay in an environment, there you pick up the language, there you learn everything, how to speak, how to understand, when to keep quiet, when to switch over from your local language to a language which everybody understands. So the learning is whether you know that language, English or not. It is the environment, if you start living into it, you pick it up. And there is no going back on it. And one does not have to worry about being physically fit or not. I remember we used to run cross country in the school. I was one of the person who used to be last 2 and 3 in the school. But I never got physically relegated in the school, in the correction at NDA. I passed all my tests in PT. I learned my swimming over there. I didn't know swimming. I learned and I picked up swimming. I learned all the strokes of swimming. I have never sat on a horse. I learned riding. So it is not what background you come from, whether you have that opportunity or not. It is when opportunity is offered to you, how much you pick it up from that. That is more important. And that is what NDA and IMA offers you. And whether you have the capacity to pick that up is what is essentially seen at the SSBs. That is what we call as, do you have a potential? We are not looking for ready-made officers when you appear for SSB. That would be
very big misunderstanding I feel people have. That when you appear for SSB, you should be officer-like. No, you should have all the qualities of officers. No, that is totally misplaced information. What we are looking for is, do you have a potential to be an officer, and how a potential, whether you have a potential to gain from the training that is going to be imparted to you over a period of 3 years, 1 year, or 1.5 years. So with that note, I think we can start the question answer, and we'll keep on adding the anecdotes or something as it comes. Yeah, anyone now? I'm not very, and I'm not very humorous kind of a person. Yes, I cannot crack many jokes, but yes, I'll be live. I'll be with you all. I'll be at your level. Not to worry. Your energy is visible, and ये सारे serious students इनको jokes की जरूरत नहीं है. ये वैसे इनको सिखाया गया है कि to be smiling always, because being liveliness is one of the things. It's better to be lively than to be morose person. So it is your energy is quite visible. So anyone now from our Zoom class wants to ask question, and straight we are going to question answer session. चलो अभिषेक पूछो. हाँ. Hello, sir. Good evening, sir. Yeah, So my question let's not kill time. What I request is no formalities, no good evening, good afternoon, nothing. Straight to the question. So we save 10 seconds. So my question is that, sir, what are the qualities that you judge in any candidate? So my question is that. Okay. Anybody has got a similar question or something close to it? Yes, sir. Yeah. Yes, the question has to be spoken. Yes, sir. I also want to ask that what is the first quality which you see in any candidate? Like the first perception, what you look for? I want everybody to choose what they have in mind, even if you feel it is repetitive, even if you feel it is close to what the previous speaker has spoken. Kindly speak out your mind so that I can understand, and then I give you a total question and answer in totality. Sir, what are the things you see in a candidate in the stage 1? So what are the common mistakes candidates generally do while appearing for SSB? Sir, as you said earlier about potential, sir, so how can we know about the potential, that is, can we fit in armed forces or not? Okay. So sometimes many candidates feel like that they are confident and they are also capable to achieve that state that they get selected. But sometimes in the preparation time, in the process, they get distracted or get that low confidence in them that they doubt themselves. Okay, fine. आपने वो कृष्ण भगवान का एक फेमस स्टेटमेंट सुना होगा जो अर्जुन को कहा था. क्या था वो स्टेटमेंट? वो कहते हैं ना, कर्म की इच्छा कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए. एक गाना भी है, वो कौन सा गाना है हिंदी में? कर्म किए जाओ और फल की, ऐसा कुछ गाना है कि नहीं है? Now, if I look at a sample, I think we are about 100 plus to the webinar. If I say 10% of the people have asked me question, none of you have asked me a question as to how do I train myself to appear? How do I prepare myself? Your question is about others. How will I be assessed? What is he looking in for me? What is the quality he is looking for? So you are positioned towards the other side of the fence. You are not worried about yourself as to what should be your karma. How should I prepare myself? Whatever I am preparing, is it on the right track or not? And this is the major drawback that I have seen
in 99.9 candidates who approach me for guidance. मैं हमेशा एक ही चीज सब बहुत ही सिंपल शब्दों में कहता हूं, आप अपना कर्म कीजिए. लेकिन उल्टा क्या होता है, यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर कर्मा based on expectations of others. So you are more interested in knowing what the other person is looking for. Is he looking for this? Is he looking for that? Is he looking for this and that? Why? Is my question to you. Let me understand that. Says today I am interacting with a large crowd of aspirants who wants to join armed forces. Why is it that you as a youth is trying to respond to the fixed frame of mind or what I expect from you? Why you are not trying to respond as per your own Josh, as per your own willingness, as per your own goals in life? Can I understand that first? So maybe the कुछ desperation. भी बोलिए, हिंदी में बोलिए. देखो, I can understand Hindi, I can understand Punjabi 50%, I can understand Marathi 25-30%, Gujarati 100%, English 100%. तो लैंग्वेज आप किसी भी में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. Sir, like from our side, sir, we will trying our best, sir. But sometimes in our mind, after getting failure, sir, we try to know that if someone would, like sir, SSS, what wanted from our side, sir. So that's why to get success, sir, we seek for such responses, sir. Okay. Anjali was saying something. Anjali. Sir, I was saying the similar thing that we get desperate, and then when we want to reach the place, we look for what's the tip or what's the easier way. So if we deliver to them what they require, then if I say it sarcastically, people of our generation, they call people to your generation as a 2 minutes model generation. yes, sir. सबको फटाफट टिप चाहिए. मेरे को टिप दो, मेरे को I am investing in shares now. I just started investing in shares about 1 week back. मैं भी ढूंढ रहा हूँ, टिप मिल जाए. But that is a wrong approach. It's a shortcut. टिप मिल जाएगी, हो सकता है मेरा लक. But I have to understand fundamentals of the stock market. Where I am spending time in understanding the fundamentals of stock market. If I understand fundamentals of stock market, I don't require tip. You people are looking for shortcuts to success. And let me tell you, when you start asking people about their opinion, everybody has their own opinion. If you ask me, sir, Delhi kaise jana hai? So somebody will tell you, go to Delhi by air. Second chap will go walk to Delhi. So third chap will say, cycle to Delhi. You have to have your own things in mind. Don't wander around. You ask your approach. There's nothing wrong in being aspiring to be an army officer. SSB में appear होना है. अब उसमें वो OLQ देखते हैं या आपकी ब्यूटी देखते हैं या आपकी मसल्स देखते हैं, उससे आपको क्या मतलब है? कोई मतलब है आपको? यदि ब्यूटी देखते हैं तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट करा देते हैं. यदि फिजिकल फिटनेस देखते होते हैं तो पहले आपको 1 माइल दौड़ा देते हैं. 50 पुशअप जो कर सकता है वही आ सकता है, नहीं तो कोई अंदर नहीं आ सकता. यदि परसेंटेज होते पहले ही बोलते हैं, भाई आपके 90% है तभी अप्लाई करना, नहीं तो अप्लाई मत करना. ऐसा कुछ है? फिर आप लोगों के दिल में ऐसा क्यों आ रहा है कि कौन सी क्वालिटी पहले देखते हैं? वो क्वालिटी देखना है, क्या क्वालिटी देखनी है, कैसे देखनी है, उसके लिए the government spends lakhs and lakhs of rupees in training officers who are assessors like us. It is our job. Your job is not to assess. तो आप लोग क्या करते हो? हमारा काम करना शुरू कर देते हो. क्या मुझे करना चाहिए ताकि मेरा इनिशिएटिव दिखे, क्या करे तो ये दिखे. पहले तो यदि आपको एसएसबी में जाना है तो ये क्या OLQs होती है, क्या क्या OLQs लिखी जाती है, इस सब के ऊपर आप ताला मार के अपना दिमाग बंद कर दीजिए. उससे आपका कोई मतलब नहीं है. वो मतलब हमारा है.
वो हमारा काम है एज असेसर्स. जो असेसर्स एसएसबी में बैठते हैं वो उनका काम है. आपका काम क्या है? आपका काम है टास्क को अंडरस्टैंड करना और उसको दिए गए समय के अंदर उसको पूरा करना. ये आपका सिर्फ काम है. आप लोग कितने लोग एसएसबी में गए हैं? कोई गया एसएसबी में? Yes, sir. Conference. Yes, sir. ओके. तो आई टेक इट फॉर कम से कम 15-20% लोग आप लोग एसएसबी में अपीयर हुए होंगे. आपको कहीं पे भी जीटीओ ब्रीफिंग में, साइक ब्रीफिंग में या ओपनिंग एड्रेस में कभी ये बताया गया है कि आपको ये क्वालिटी दिखानी है और आपको ये क्वालिटी दिखानी है और आपकी ये क्वालिटी एसेस की जाती है? कहीं पे भी आपको बताया जाता है? No, sir. No, sir. हाँ या ना? तो फिर ये सवाल क्यों आता है कि सर कौन सी क्वालिटी देखी जाती है? Why this question? The answer is we are looking for shortcuts to success. There are no shortcuts to success. तो आपको, if you trust me, if you believe in what I say, so from now on आपके दिमाग से एसएसबी में मेरे में क्या क्वालिटी देखते हैं, क्या क्वालिटी नहीं देखते हैं, कैसे क्वालिटी देखते हैं, वो सबका आपके ऊपर जीरो ध्यान जाना चाहिए. This is not your subject and you should not devote your time, money, energy, efforts on this question and on this aspect. Pin drop silence. नहीं सही है. आप हैरानी होगी, मैं यही बात इनको इतने दिन से कहता आ रहा हूँ. I've been saying this. मैंने कहा तुम्हारा OLQ देखना नहीं देखना ये एसेसर का काम है. Why are you worried? कितने, मैंने कहा हमें तो OLQs ही कई साल की सर्विस के बाद पता लगा OLQ क्या होता है. We never knew what is this term when we went for SSB. So why are you wasting time? I've been telling these children the same thing, and exactly good you brought that out. So good. Second question. So there are a lot to cover. Second question. So ये OLQ chapter खत्म. I believe it is chapter closed. Yes, sir. It is completely finished. Please don't surf internet and to find out how to clear SSB. This will be the biggest disservice you will be doing to yourself. Is because there is so much plethora of information available. I will correlate to stock market. मैं बोलता हूँ कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो देरे 50 कंसल्टेंट है, 50 लोग बोलते हैं ये ले लो, वो ले लो, ये बेच दो, वो बेच दो. वो मैंने बंद ही कर दिया. मैं बोला फंडामेंटल सीखो. क्या फंडामेंटल्स है? Because please understand, you have a very big advantage in your generation, and at the same time you have a same degree of disadvantage. The access to information is so much that you are not capable of sifting that information, analyzing that information, and finding out which information is applicable for you or not. And then you pick up the wrong inputs. वो वहां पे उस ट्रेनिंग एकेडमी के वीडियो में ये दिखाया था तो ये करना है, वहां ये दिखाया, तो फिर then you get confused and you go as a confused candidate in SSB. So for God's sake, for anything, if you have information, you require a mentor. You require a person who can disseminate that information, who can sift that information, who can arrange that information, and then tell you, okay, this is meant for you, this is not meant for you, this is how it is supposed to be interpreted. And unfortunately, let me tell you, how to perform in SSB, what to do in SSB, nobody in this world can tell you, including myself. What we can tell you is the basic fundamentals. That's all.
बाद में उस स्विमिंग पूल में आपने डुबकी मारनी है, अब उसके अंदर तैरना है, कैसे तैरना है, कौन सा पाँव मारना है, सांस लेना है कि नहीं मारना, वो सब आपने डिसाइड करना है। वो आपको, यदि आप ये सोचते हो कि इस दुनिया के अंदर कोई भी आपको बता सकता है कि एसएसबी में कैसे अपीयर हो सकते हैं, देन आई गॉट नो कमेंट्स. Nobody can tell you. Even I cannot tell you. लोग मुझे पूछते हैं कि सर मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे बताऊंगा तुझे क्या करना चाहिए? वहां पे तेरे आसपास कैसे लोग होंगे, उसमें से कितने पंजाबी होंगे, कितने तमिलियन होंगे, हाँ, कितने को अंग्रेजी आती होगी, नहीं आती होगी, क्या माहौल बनेगा, मैं कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? सो हाउ कैन आई टेल यू कि हाउ विल यू डील विद दोस पीपल? किस तरह का जीटीयू आएगा, किस तरह का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू ऑफिसर कैसा होगा, उसका मूड कैसा होगा, वो मैं कैसे बता सकता हूँ? So that is only the situation will tell you, and that situation you will be capable of handling if and only if you have a clarity of fundamentals. That's all. Clear? So let's go to the next question now. Yes, sir. We have right track. Yeah, first class. Very, very interesting. Very interesting. Yeah, Dipanshu, pucho. Our next set of questions. Next set of questions. Good evening, sir. My name is Dipanshu and I am from Chennai. So this year in September, I am going to give my first attempt. Hello, sir. Yeah, bolo na. Question. Yes, please. Ask question. So, sir, my question was, can you say me the procedure? I mean, my civilian family, so I don't know the procedure and all. Okay, fine, understood. Similar question. Yeah, Rohit Kala, Beaton Mondal, पूछो. So my question is, how do we do self-assessment? क्योंकि कई बार जो हमें अपनी कमियां लगती है वो हमारी strength भी हो सकती है. So how can we turn our odds into our favor? Sir, the second question, please keep it reserved for some time. I would like questions which are close to the question asked as to what is the procedure. So the question similar to that, let me hear it so that I can give a broad answer so that we can kill one topic, like we killed topic of oil queues. Yes, sir. Sir, I also want to know that I am going to appear in AFSB and it is my first time in SSB. So I want to know that if there is any in general difference in between SSB and AFSB or these are same. Okay, good. Next. Sir, how can I improve my imagination in psychology test? ये थोड़ा बाद में प्लीज रिजर्व रखो थोड़ा सा. I think will come up in third or fourth question. वो अभी इसके बाद में आते हैं. Please keep it reserved. I have requested two of you to keep your questions reserved for future. Okay? रोहित का और महक का क्वेश्चन रिजर्व रखेंगे. सत्यन, ये एक YouTube पे एक बच्चा पूछ रहा है कि आपने फंडामेंटल की बात की कि फंडामेंटल्स को कैसे इंप्रूव करना है. ये जो आपने फंडामेंटल्स की बात की ना कि फंडामेंटल्स पे जोर दो. तो अभी एक वन ऑफ द यंग लेडी स्पोक अबाउट कि मैं अपना इमेजिनेशन कब कैसे इंप्रूव करूंगी. तो वो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ. ओके, फाइन. You see, it is very natural for a person who is from a civil background or a person who has no idea what army is, and definitely is quite stressful to know क्या होगा, कैसे होगा, SSB, FASB. Please understand, have faith in the system. That is point number one. Okay, the recruitment system in Army, Navy, and Air Force, they are almost similar. Options, verifications, they give you instructions. Please read those instructions. Those instructions are very well self-explanatory in nature. They also give you a contact number and an email ID. So if you have any confusion or anything, instead of asking the crowd and the general public and the ex-servicemen and
please write to them directly. Right? They are the, what happens if I am your neighbor and if you know me, I have been to SSB say 5 years before. A lot of things changes. There are certain local changes also. Therefore, always make it a point to get your doubts resolved from the contacts provided to you by the respective recruiting directorates of Army, Navy, and Air Force. Right? That is the point. Second point is, when you go there, there is something known as open, which is taken by a GTO. In the opening, he explains everything in detail, your program for the next 5 days over there. So even if you have even if you do not have any idea, there's nothing to worry. You go there, you will have enough time to understand. In the opening address, you are given the opportunity to ask questions to clarify your mind. Okay. So these are the two major and fundamental source of clarifying your doubts. Okay. And even if you don't know, the only difference which between a person who does not know anything about the SSB and a person who has been to SSB or is from a background or familiar with SSB is that he knows कि वहां जाके क्या होगा, उसको पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा. Once the opening address is over, everybody is on the same platform. Okay. Coming on to the test. Prior to the commencement of the test, whether it is a psychological or whether it is a GTO task, the concerned assessors will explain everything about the test and what the test is, what is you are expected to do, and what is the time frame, and what are the parameters for reference, or what are the rules, regulations, constraints. Everything will be told by them and explained to them. Right? So even if you do not know, there is nothing to worry. When you go on ground, everything is explained to you in detail, and you should not hesitate to ask the assessor if you have not understood something. So it is very important for you to commence your psychological test or a GTO task with a clarity in mind, not without doubt in mind. Is that okay? Yes. Same information is available on the internet. What is the procedure at SSBs? But it does vary from SSB to SSB in sometimes, not exactly, because of the general local conditions. Otherwise, SSB is civil SSB, whether Air Force SSB, whether Army SSB. Okay, but in terms of local conditions, कहीं सुबह जल्दी हो जाएगा, कहीं तो सुबह लेट होगा, कहीं जगह बारिश होगी, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, वो लोकल कंडीशन से चेंज होता है. But the general procedures is almost similar across all SSBs of the 3 services of defense. Any other question on this SSB का? सत्यन आपका hang हो रहा है. So you know, we had reached almost 360 on YouTube, and we are dropping there because buffering हो रही है. In between video and audio both are getting you know, stagnant. Just see if there is a network issue at your place. No, I have got a 4G. एक बार refresh कर लो because या Wi-Fi को just a second. हाँ, Zoom पे भी clear नहीं आ रहा था, आपका कट के आ रही थी आवाज. Friends, just wait. We'll fix this glitch very quickly. Till then, देखो 2-3 चीजें उन्होंने बड़ी अच्छी बताई हैं. This is what I wanted to tell you all till the time the issue gets fixed. Firstly, get information only from authentic source. Abhi, is it okay? Let me see. 1 second.
No, yours is still very low. It's showing low bandwidth. Just a second. Just wait a minute. आप कर लो 2 minute कोई नहीं. We'll continue the question answer. See, very important issues. है ना? Don't listen to too many people. Don't go on to websites and start from one end to another end. It will never end. There's so many people trying to give you information. And he brought up wonderful thing initially. Please don't forget about what is OLQ, what OLQ I have, what OLQ. Just be your normal self. Just be your normal self. Because everyone has a different environment from where you're going to reach there. And you don't know whom you're going to face. So if your basics otherwise are okay, if you feel you have it in you, you are practiced, you're physically fit, mentally alert, you're well-read person, you're a balanced personality, you're an all-round kind of personality, go with an attitude. I always say SSB is going with an attitude. You are too desperate, it brings nervousness, it brings irritation. Others will get irritated with you if you're too desperate. And is it fine now, Max? Let me see. Yeah. So the moment I will just connect. So, chalo, let's hear you. Is it better now? Little better. Let's hear you. Yeah. Any question? Somebody we can start fresh. कोई क्वेश्चन है किसी के पास? रोहित, तेरा क्वेश्चन बाद में आंसर करेंगे. कोई और किसी और का? Somebody else who has anything to ask him. Sir, I want to ask one question. Bolo. Yes, sir. Recently, sir, I am appeared in SSB of TES and T, in which I just got skinned out. So, sir, where I perform very well in my narration, GD, and also my story is so much related to the picture. So, sir, but I just got skinned. So, sir, how did I find that where I just got skinned out? Me, कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ लैग कर गया, कहाँ कमी रह गई? ये ना सत्यन ये बड़ा common issue है. A lot of children complained of this कि मैंने बहुत अच्छा किया. I should have got selected. I didn't get selected. How do you answer the screening का issue? अच्छा, wait. नहीं क्या है ना, आदित्य will take this question of yours. Aditya will take this question of yours. ठीक है? क्योंकि ये डाउट रहता है, हर एक को डाउट रहता है, बिकॉज स्क्रीनिंग ऐसे फटाफट हो जाती है. और टीएस में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली जो मैं बच्चों से फीडबैक ले रहा हूँ, 400-450 बच्चे जाते हैं. कट ऑफ इतना लो रखा हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एलिजिबल एंड ईच बैच दे आर जस्ट टेकिंग 18, 20, 22 समथिंग लाइक दैट. So maybe in your batch, you don't know about your OIR. You feel you wrote a good story, but you don't know what you wrote. Narration, of course, you can be confident that you narrated well. That I agree with you. So we will ask this question. Anything else, before he comes on? Anybody else other than this is a good question. यहाँ पे भी पूछ रहे हैं लोग. YouTube पे भी हमारे पास फिर से we are more than 326, 330 we are going, and we are 73 plus here. So we have a good strength of 450 plus, almost 500 people listening. तो इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? बच्चा पार्टी पूछो अभी. You have a very senior, GTO expert person to tell you. Otherwise you're back. आप बता दो. Yeah, I'm back. I'm now very close. I'm on 5G now. हाँ बस अभी ठीक है. Yeah, now. Oh yeah, it's very clear now. Now it's much clearer. Yeah, I think you shifted your location. Yeah, I'm just 1 meter from the router. बस ठीक है. तो ये बच्चे पूछ रहे हैं आदित्य और यहाँ भी कि स्क्रीनिंग का कहते हैं they have done well, but हम screened out हो गए. How do you judge? How does a child judge where he or she has lacked? Let me ask a counter question. Do you think the SSB is an exam? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. What is it? Sir, it's a personality test. Yeah, sir. It's a personality test. We testing your personality means how which type of person you are. Okay.
Sir, there. Sir, in my opinion, SSB is a series of steps in which our capabilities and strengths and our behavior is checked. How mentally we are strong and how physically we are strong. How we handle any situation, I think. Okay, fine. It is a selection process, sir. That मैं is. जब लोगों से बात करता हूँ ना कि सर एसएसबी क्या है नहीं है, तो पहले मैं इनको बता देता हूँ. देखिए, यदि हम आपको पूछे हैं कि व्हाट इज 2 + 2, व्हाट इज द आंसर? 4. इसके अलावा कोई आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता ना. But if I ask you dash, yeah, that is dash means fill in the blank. Dash 2 square हो सकता है. is equal to 4. So it could be 2, 6 minus 2 is 4. 1 into 4 is 4. Isn't it? So there can be a multiple options. Okay, this is the one of the practical ways of understanding what an SSB is. Am I right? All with me? Are you able to hear? Yes, sir. Yes, sir. General note, please. Abhi bilkul clear. Yeah, absolutely clear. Fine. So that is one point. That you have to understand that when you are appearing for SSB, it is not an exam. If it is not an exam, that means there is no DS solution. You understand what is DS solution? Exam में क्या होता है? आप आंसर लिखते हो. जो एग्जामिनर होता है उसके पास आंसर लिखा होता है, वो आंसर से मैच करता है. आपका आंसर और जो एग्जाम का आंसर मैच करता है तो आपको 10 में से 10 मिलते हैं. मैच नहीं कम करता है 10 में से 8 मिलते हैं, और बिल्कुल खराब है तो 10 में से 0 मिलते हैं. ठीक है, यहां पर कोई ऐसा आंसर है ही नहीं. ठीक है. सो इफ यू थिंक that we are looking for a particular answer, or we are trying to match your what you say or what you write with something we already have with us, it is not there. Okay, to amplify it, let's say you are at Delhi and we tell you, okay, you have to go to say Bombay. आप कैसे जाओगे? तो कोई बोलेगा साइकिल से जाऊंगा, कोई बोलेगा प्लेन से जाऊंगा, कोई बोलता मैं गुवाहाटी जाऊंगा और गुवाहाटी से मैं बॉम्बे जाऊंगा, कोई बोलता मैं जम्मू जाऊंगा, मैं जम्मू से गुवाहाटी जाऊंगा, कोई बोलता मैं चेन्नई जाऊंगा, चेन्नई से बॉम्बे जाऊंगा. अब कोई भी गलत है? No sir. लेकिन that is where, but yes, something would be time consuming, some will take more resources, some will if you fly it will more money. So that are various options have to be taken, and finally you decide, okay, what is the best way to go to Mumbai from Delhi. कोई बोलेगा I fly to London and from London से मैं मुंबई जाऊंगा. Is there anything wrong in it? Nothing is wrong. No sir. Ultimately you have to reach Bombay. वो मैं थोड़ा एम्पलीफाई करके बता रहा हूँ जो एक्चुअली लाइफ में नहीं होता है. सो दैट इज वन एस्पेक्ट यू डू. वी डू नॉट हैव अ रेडीमेड आंसर टू कंपेयर व्हाट यू राइट और व्हाट यू स्पीक. ओके, दैट इज पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3 इज, आप लोगों ने काफी ने बोला पर्सनालिटी असेसमेंट होता है, ये होता है, वो होता है. लेट मी एक्सप्लेन टू इन वेरी ब्रीफ द होल SSB how it functions. संस्कृत में कहते हैं वो एक मनसा होता है, एक वाचा होता है, एक कर्मा होता है. सुना है 3 शब्द आपने? Yes sir. Yes sir. तो कहता है कि if you can assess or if you can find out how and what a person thinks and why a person thinks, and if you can find out and understand what a person speaks, how he speaks and why he speaks, and if you can assess how he works and why he works, etc., etc., then you can know what a person is. So that is exactly done at SSB. There is a psychology technique which assesses what you think. There is an interview technique which assesses the vacha part of it, and there is a GTO technique which is the karma part of it.
So these are three dimensionals, or these are the three dimensions from which you are assessed. I don't want you to unnecessarily take technical words like personality assessment. वो सब छोड़ दो, वो आपका काम का नहीं है. सीधा है कि assessment होता है आपका, ठीक है? And there has to be a consistency of your performance on these three spheres or these three angles from which you are assessed. If there is a consistency, you clear or you get recommended. If there is an inconsistency, you may not be clear. So this is in very brief how the SSB functions. Okay. And I'm sure still you are not interested in what I'm saying, because you are interested in knowing कि मैं क्यों रिजेक्ट हो गया, किस वजह से रिजेक्ट हो गया, मेरे में क्या कमी थी, मैंने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी थी, ये लिखा था, फिर भी मैं कैसे रिजेक्ट हो गया. Am I right or not? No, sir. हैं? Let us be frank. देखो, वो मेरे साथ वो फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है. मुझे मालूम है आज के बच्चे को इंटरेस्ट है वो फ्रूट के अंदर. बस ये सब बकवास सर आप छोड़ दो. आप मुझे बताओ, हम 400 लोग गए थे, हम 18 ही पास क्यों हुए, बाकी के 200-320 गधे थे क्या? So currently there is no such interest because I have never been. Yeah, you are lucky that you never been. But आप में से 50% ऐसे होंगे जो होके आए होंगे, या 20% होंगे, 30% होंगे. Yes, sir, but your technique will reduce the pressure a lot. Okay, so what happens is that all those who appeared in SSB, it is our endeavor of all the assessors to make the candidates feel that they have performed well. अब जैसे आप लोगों से कई लोग सिविल में इंटरव्यू में ले गए होंगे, सिविल जॉब के लिए, बीपीओ में काम करने के लिए, कहीं सेल्स का काम करने के लिए, कहीं पे बैक ऑफिस का काम करने के लिए गए होंगे, नहीं गए होंगे? Yes, sir. हाँ ना? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. तो मैं भी कॉर्पोरेट में एचआर में मैंने 8 से 10 साल काम किया है. हम बंदे को इंटरव्यू बुलाते हैं, 5-10 मिनट में लगता है कि इसको हम नहीं ले सकते, बोला सॉरी यार तेरा नहीं हो सकता, या उसको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका वो आंसर नहीं दे पाएगा. तो जो बाहर निकलता है वो समझ जाता है कि मेरा यहाँ से कॉल आने वाला नहीं है, ठीक है. बट दैट डजंट हैपन एट एसएसबी. When you appear for interview or when you appear for GTO task, you always feel हमने बहुत अच्छा किया है, मैंने तो सारे क्वेश्चन पूछे थे, सारे क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया है. Is because that is what we ensure that you have that feeling. The reason is that you may have to appear for GTO task, or you may have a balance of a task which is left. So we don't want to let that feeling seep into you that मैंने अच्छा नहीं किया. ठीक है? So it is very difficult for me, Miss. I can only tell you why the candidate was not recommended if and only if I was part of that panel sitting over there. Otherwise, if anybody on this earth tells you कि आप क्यों select नहीं हुए without he being present over there, is just an eyewash. ठीक है? हाँ, यदि मैं आपका असेसर हूं और मेरे सामने आपने काम किया है मेरे सामने, तो बाद में आप कभी मुझे मिलोगे तो मैं आपको बता पाऊंगा, और वो भी मुझे याद रहेगा. तो एज एन असेसर हर चौथे दिन में हम 10-10 कैंडिडेट देखते हैं. आप मुझे 1 महीने में मिलोगे तब तक तो मैं 100 से 150 कैंडिडेट देख चुका हूँ. तो मुझे कहाँ से याद रहेगा कि सागर आया था या रोहित आया था या आदित्य आएगा, मुझे थोड़ी याद रहेगा. Therefore, again, I would say we were talking of fundamentals. Don't focus on negativities of life. Don't focus on मैं reject क्यों हो गया. You should focus you should focus on what should I do that next time I do better. Let's not talk of selection. Let us not talk of result. Your energy and mind should be focused on what should I do and how should I do better. That should be your focus on.
So my request is, first fundamental is shift your focus from negativities to positivities. And positivities है ना, बहुत सिंपल चीज लाइफ, हो गया तो हो गया, नहीं हुए तो नहीं हुए, अपना बिस्तर बांधा और घर वापस, अगली बार जब नेक्स्ट आएंगे तब चले जाएंगे. आपको थोड़ी किसी ने मना किया है कि आप दोबारा अपीयर नहीं कर सकते. लोग 6 बार अपीयर करते हैं, 7 बार अपीयर करते हैं. तो आपको मौका दिया जा रहा है, तो किस लिए कंप्लेंट करना. हाँ, आपकी कंप्लेंट इज वैलिड. इफ द आर्म फोर्सेस हैव अ पॉलिसी दैट वंस यू आर रिजेक्टेड यू कैन नॉट अप्लाई, ऐसा पॉलिसी है तो मुझे बताइए, है ऐसा पॉलिसी? नो सर. नो सर. नो सर. तो किस बात की शिकायत है आपको? इफ यू आर मीटिंग द क्यूआर यू कैन अप्लाई, यू कैन अपीयर. वो आपको दोबारा करते हो, तीसरी बार करो, तीसरी बार करते हो, चौथी बार करो. So shift, one of the fundamentals is don't focus on non-essentials. I would call it non-essentials. One non-essential is क्या quality मेरे में देखनी है, वो आपका सरदर्द नहीं है. Second is negativities, मुझे क्यों रिजेक्ट किया गया, मैं क्यों सक्सेस नहीं हुआ, वो कैसे हो गया, वो तो चुपचाप बैठा हुआ था, उसको तो कुछ आता नहीं था, वो कैसे हो गया और मैं कैसे नहीं हुआ. वो सब कहानी छोड़ दो. फोकस ऑन ओके नेक्स्ट टाइम आई विल अप्लाई अगेन, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, हो सकता है मैंने ये ठीक नहीं किया हो, ठीक है. सो दैट इज अ वे आई वुड सजेस्ट यू शुड हैंडल इट दैट वे, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू नो एज टू व्हाई आई गॉट screened out. I cannot tell you why you got screened out unless and until I was sitting there as a part of assessor in front of them. Very good answer. This is what Yes, I sir. keep saying. This is what I keep saying, telling people who have repeatedly been screened out or conferenced out. Ki don't look who got selected, why. You must analyze it immediately. In fact, in a diary, go over each activity, right from your GTO, your psych, your interview. You feel that SSB makes you feel very good. They never tell you. Even the IO, even if you have bluffed your way through, and the moment you leave the door and he knows ki you don't have it in you, but he'll never tell you this is your weakness. He'll smile you, he'll chide you, he'll listen to all your this thing. He'll still be patient with you, because they want you to continue to have this, inspiration to cut back. So don't worry. Always introspect. आप देखो आपने क्या improve करना है. And I'm sure most of your adults, you know your weaknesses where you could have done better, but you couldn't perform. So next time, work on that. Work on those areas, and go every time. Go a better person. Okay, now we come to third question, third set of question. Yeah. Anyone now? वो किसी दो क्वेश्चन हमने छोड़े थे ना, कुछ 2 क्वेश्चन है. आई होप वन ऑफ द क्वेश्चन हैज गॉट आंसर्ड. Yeah, रोहित काला का आंसर है. रोहित काला wants to know, and अपना Mehak had also asked a question, how to be more imaginative. And Shubham, पूछो भाई, Shubham क्या question है आपका? Okay, now let's who asked this question, how to be more imaginative? I think Mehak. Yeah, Mehak. Yes sir. वैसे महक चुप रहती है, आज पता नहीं चेक, आज इसने बड़ा सॉलिड क्वेश्चन पूछा, नहीं तो आई हैव टू prod her. महक, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? ओके महक, वुड यू लाइक टू एलाबोरेट योर क्वेश्चन और somebody दोबारा पूछ अपना क्वेश्चन. महक, अगेन आस्क योर क्वेश्चन. गुड, यू आर ऑन बिग स्क्रीन. how we expand our imagination in psychological tests. Like I am not appeared for SSB till now, but in coming months maybe I am. Why do you think that you are unable to imagine? No sir, I don't think so, but I am just asking how we can like. How do you know that your imagination is not up to the level? I would like to let us try to learn from. See, I'm not trying to put Mahak down. I'm just trying to use her question as an example for all of us to learn. Okay, so Mahak, abhi I will be shooting questions to you which may pain you. But you have become the target now, so आपसे हम सीखेंगे. तो महक, आप कैसे कह सकते हैं कि आपको इमेजिनेशन को बढ़ाना है, क्योंकि आपका इमेजिनेशन ठीक नहीं होगा तभी तो बढ़ाना है ना.
Sir, because I'm in the BOCC course of yes, sir, and where we will make some stories also. So, ma'am, sometimes Palak ma'am said to me that you have to think out of box and improve your imagination. That's why I'm asking. He's just आपने not, ये सवाल वो वो पलक मैडम को क्यों नहीं पूछा? वो ये पूछना चाहती है कि हाउ टू बी मोर इमेजिनेटिव, कि मैं नई नई स्टोरीज कैसे परसीव करूं, ये कैसे आपको ये ऑब्जर्वेशन पलक मैडम का था ना? यस सर. तो आपने पलक मैडम को पूछा कि मैडम आउट ऑफ बॉक्स कैसे करूं? Yes, sir. She said that you have to think different from others. तो आपको पूछो डिफरेंट मतलब क्या है? Like which is not very basic. Basic मतलब, see why I'm asking this, prodding her is we are beating around the bush but we are nowhere on the target. We are unable to define out of the box. We are unable to define different. ठीक है, तो मेरा आपसे ये सबमिशन है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. एवरीबडी हैज हिज ओन लेवल ऑफ इमेजिनेशन. ठीक है, आई कैन ओनली टेल यू how to improve your level of imagination once I know what is your present level. Do I know that? Sir, from before now it's expanded. Like I am thinking out of box. I am giving more pressure to mind while making some stories. But before that, I am not this. I am not thinking of out of box. And I'm just Fine. making very normal stories. Let me tell you in a general. In psychological test, you don't make stories. Please understand. You don't make stories. You don't fabricate stories. In a layman's language, what gets reflected in a psychological test is your knowledge, is your experiences, is your value systems, your beliefs, etc., etc. Have you got the point? So this is the third fundamental. Let me share with all of you that in psychological test, you don't fabricate stories, you don't make stories. You are not a story writer there. The psychological tests are designed to reflect what you are. They are designed to reflect what you believe in. They are designed to reflect what are your experiences. They are designed to reflect what you are thinking. But if you start doing that, if you are thinking XYZ and you make it into ABC, that's where the whole problem happens in the psychological test. You do not require any preparation for psychological tests. You do not require any practice for psychological tests. The main reason is why I make this statement is, if you are practicing psychological test, it has to be in the same scenario as it happens in SSB. That is point number one. And second, whatever you write, that needs to be assessed. And you require to be called upon and counseled. If that is happening, it makes sense. If it is not happening, then my sincere advice is there is no practice required of psychological test. Because आपने, I'll give you, amplify with an example. आपने आप टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करते हैं ना, जब आप 10th क्लास 12th क्लास नेट वन एट ऑल दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप अपियर कर प्रैक्टिस करते हैं ना, आप लोग कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर उसके अंदर आपको मॉक टेस्ट कराते हैं नहीं कराते हैं? यस सर आप लोग एनबीए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन हुए होंगे काफी लोग. तो वहां पे भी आपको टेस्ट कराते हैं ना, पेपर के कैट एग्जाम के टेस्टिंग कराते हैं ना? यस सर. वो टेस्टिंग आपको बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं? आपको आंसर शीट देते हैं?
आंसर शीट देगा, आपको बोलते हैं आपका इतना परसेंटाइल हुआ, या आपका आपके मैथ्स में इतने मार्क आए, आप में इसमें इतने मार्क आए, आपको बताते कि नहीं बताते हैं? हाँ या ना? यस सर। यस सर, बताते हैं सर। यस सर। हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब आप साइकोलॉजिकल टेस्ट की आप प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको कोई बताता है कि आपने जो लिखा हुआ है उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, या उसका क्या काउंसलिंग है, कोई बताता है आपको? नो सर। No, sir. I hope you got the answer. Yes, sir. So there is no point in practicing something in which there is nobody there to tell you. But there is one very important thing which I can share with all of you from what we have learned on our interaction with Mahek is, you don't make stories. In psychological test, you don't fabricate stories. No, sir. I was talking about my imagination. So you can only when something is there, you have to think. So thinking is a better word for thinking is imagination. And imagination comes from what? Imagination comes from your knowledge. Past experience. It comes with your exposure. It comes with your experiences. Okay. So say hypothetically, Meg, you are from which place? Sir, I am from Rewari, Haryana. Let us assume then Mehak is born, brought up, studied in Rewari only. और रेवाड़ी कितना बड़ा है? कितना बड़ा शहर है? तहसील है, टाउन है, सिटी है, क्या है? सर सिटी। छोटा शहर है, 10-20 लाख की पॉपुलेशन होगी। महक? यस सर। तो हम ये मान के चलते हैं कि महक अब तक जिंदगी में रेवाड़ी के बाहर नहीं गई है। ठीक है, ये एक एजम्पशन हम लेते हैं। तो आप सोचिए उसका एक्सपोजर क्या है अदर देन रेवाड़ी? कुछ भी नहीं है। फैमिली एंड द फैमिली, दैट्स ऑल. And say for example the family is conservative. Please don't mind, I don't know, I'm just taking an assumption. जो मोस्टली इंडिया में होता है, लड़की स्कूल जाएगी, स्कूल से सीधे घर वापस आएगी, कॉलेज जाएगी, कॉलेज वापस आएगी. So what is her sphere of what she has seen? It is only college. कॉलेज में 4 दोस्त होंगे, उससे 5वें दोस्त नहीं बनाना है. दोस्त लड़की ही होनी चाहिए, लड़का नहीं होना चाहिए. हाँ, भैया लेने जाएगा, कॉलेज से लेके वापस आ जाएगा, घर आ जाएगी तो शी इज अंडर क्लोज सुपरविजन ऑफ brother, father, brother and everybody. ठीक है, तो आपके एक्सपीरियंसेस लिमिटेड है, आपका एक्सपोजर लिमिटेड है. ठीक है, आपको टीवी नहीं देखना है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है. पढ़ के क्या करना है आपने? So I'm just taking a offshoot example. It's not related. Sorry, Mahek, I don't know, but हम आपका एक टारगेट बना के एक लेसन लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं. No, it's okay, sir. That please understand. I'll say it again. You don't make stories. A psychological test will be very, very easy to appear if you keep cool and you let it flow, let your emotions flow in it, let your experiences flow into it, let your value systems flow into it. ठीक है, this is one fundamental, one of the fundamental. Second fundamental, that जैसे आपका word association test आता है, thematic appreciation test आता है, situation reaction test आता है क्या नहीं है? मैं आपको एक बड़ा सा एक वेग एग्जांपल दे देता हूँ. अब जैसे लेट्स टेक अ वर्ड रोज. ठीक है, अब मुझे रोज के ऊपर 5 सेंटेंसेस सुनने हैं. यस, मेरे को स्क्रीन में जिसके नाम दिखाई देते मैं उसके नाम ले लूंगा. सो आई रिक्वेस्ट दैट पर्सन टू स्पीक 1 सेंटेंस ऑन रोज. संजय सिंह.
Rose is a symbol of love. Pritam Chauhan. Aisha developed new variety of roses. Okay, Mahek. Gulab Jal is made up from rose. Shubham. शुभम जी, शुभम नहीं बोल रहा है. ओके, प्रियंका यादव, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. So white rose is a symbol of peace. अभी ना प्लीज अभी जो मैं आगे बोल रहा हूँ. So he rose from failure to success. Pardon? He rose from failure to success. Okay, he rose from failure to success. Okay, fine. So rose water is used in biryani preparation. Rose is built in biryani. Okay, fine. Okay. Anybody जितने ज़्यादा response आएंगे उतना मैं आपको. Sir, Guns and Roses is a good band. Guns and Roses is a good band. Okay, good band. Okay. Rose are good in sweet smell of roses refreshes mind. Symbol of love. Symbol of love. Okay. So rose are good in smell. Sir, Queen Rosemary was a great queen. Huh? Dhaval ji. Rose are good in smell. Rose are good in smell. Smell बोलते हैं, fragrance बोलते हैं. Fragrance, sir. Fragrance. तुम वैलेंटाइन डे के तुम किसी को बोलेगा ये स्मेल अच्छी नहीं है तो फिर चप्पल ही खाओगे वैलेंटाइन डे में. हाँ, अच्छा, तो मैं अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उससे पहले आपको डिस्क्लेमर बता देता हूँ. ठीक है, कि whatever I am going to say is not the way your responses are assessed by a psychologist. Okay, I am just trying to give you a very simple example. आप सबने रोज के ऊपर, किसी ने बोला रोज इज वैलेंटाइन डे, कोई बोलता है रोज बिरयानी में जाता है. तो आप सबके अंदर से आपको आई विल आस्क महक, ये 5, 6, 10 सेंटेंस आए, उसमें सबसे बेस्ट सेंटेंस आपको कौन सा लगा? So white rose is a symbol of peace. Okay. क्यों है? आपको वो आपको क्यों अच्छा नहीं लगा कि रोज वैलेंटाइन, किसी ने वैलेंटाइन बोला, किसी ने बिरयानी में बोला, किसी ने बोला कि रोज की फ्रेगनेंस अच्छी होती है, वो आपको क्यों अच्छा नहीं लगा? So they were also good, but I like more this sentence. Now, if you just analyze some sentences were facts. रोज की फ्रेगनेंस अच्छी होती है, वो तो सबको मालूम है, तो आपने बता के क्या कर दिया? रोज वैलेंटाइन में देखो, सबको मालूम है. So the way is, whatever our responses are they action oriented? Are they more imaginative in nature? Are you able to connect it in a very, some out of the box, like he's connecting rose and peace, white rose and peace. कोई बंदा है शायरी पढ़े जा रहा है रोज के ऊपर. So there are different ways. तो वो देखा जाता है कि आप उसके ऊपर कैसे कनेक्ट कर रहे हो. इज इट अ mere स्टेटमेंट? तो mere स्टेटमेंट आपने चुना नहीं. ठीक है, 3, 4, 5 वर फैक्ट्स अबाउट रोज. ठीक है, वो आपने नहीं चुना, लेकिन आपने क्या चुना? White roses and peace. Symbol of peace. Which in your opinion was the best description of a rose among those 15 sentences. Okay. So this was just a very, very vague example of making you understand that it is not about making stories. It is not about making experience, fabricating stories or fabricating. It is about expressing yourself of what you believe in. If you believe and if you firmly say कि मेरे हिसाब से roses have the best fragrances, it does not mean that now you should change your sentence to white roses are for peace. No.
इफ यू बिलीव के रोज के लिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट सेंटेंस है, बिलीव इन योरसेल्फ एंड राइट दैट सेंटेंस. So to sum up all these psychological test aspects, I would only suggest that it is a method of expressing yourself. It's a method of expressing your knowledge, imagination, your value system, your exposure, etc., etc. If you keep that at the back of the mind, you will be in a better position to attempt various psychological tests in a given period of time. Can we move on to the next? Now, anyone on the GTO tasks or GTO series you want to ask about? What are your on that? If you have on GD, on lecturate, on other tasks that you do. Sir, I want to know one thing personally. Like, can I add something? Sure. Like you have mentioned the point of exposure. So I want to give an example, like the person who has no exposure of traveling in a train, and suppose he was shown a picture of train. So this is where the exposure came into play. So we can't complain to our imagination that our imagination is very low, because we are not having that kind of exposure. See, I agree that you might not have traveled in a train, but you definitely would have heard about train stories. You must have seen movies. Yes, sir. तो फिर ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ ट्रेन का नाम ही नहीं सुना है. नहीं, I was just adding that point, sir. It is relevant. It is. I would like to correct you by telling that experiences doesn't mean your personal experiences. Your experiences could be personal in nature. It could be visual. It could be heard. It could have been you know about it by reading in the books. Reading changes your life so much. You're living through the book. You're living somebody else's biographies क्यों पढ़ते हैं, autobiographies क्यों पढ़ते हैं, experiences पढ़ते हैं, war stories पढ़ते हैं. इसलिए पढ़ते हैं कि हम उसके अंदर घुस जाते हैं. We go through that experience. हमारे फिल्म इंडस्ट्री में तो about 50 to 60% मूवीज खत्म नहीं होती थी उसके अंदर ट्रेन का सीन ना हो. Yes, sir. नहीं है. वो कौन सा मूवी था वो शाहरुख खान और चेन्नई एक्सप्रेस. हाँ देखो सबको सब याद है. चेन्नई एक्सप्रेस याद है. वो सब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. तो वहां तो आपने ट्रेन देख ली. अब आप कैसे बोल सकते हो हमें एक्सपोजर नहीं है ट्रेन का. बर्निंग ट्रेन आप लोगों ने कई लोगों ने देखी होगी. यस सर. फिर YouTube पर भी सर वो ट्रैवल व्लॉग्स से जानकारी मिल जाती है ट्रेन के बारे में. Yes. So now can we come to the GTO part? Yeah, now ask questions related to GTO part. यहाँ पे मेरे पास YouTube पे जब तक ये माइंड करते हैं, बहुत से बच्चे ना सत्यन ये पूछना चाहते हैं कि हम प्योर हिंदी मीडियम में हैं तो हमारा क्या है, हम कैसे क्या हिंदी में लिख सकते हैं, एंड जीडी वगैरह में कैसे कोप अप करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स की जिनको प्रॉब्लम है, बोलना कैसे सीखें. ये कई बच्चे पूछते हैं और ये मेजर इशू भी है बच्चों का. Just try and answer that in whatever. Okay. First of all, जब हम कहते हैं कि language is never a barrier for communication, ये आपको समझना चाहिए. A communication does not mean that you can communicate to other person only by language. It could be by expressions. It could be by hand signals. जैसे मेरे को आपको समझ में मैंने कान पे ऐसे किया कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, तो आपको पता चल गया ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ. और ये हम बातें कर रहे हैं, मैं ऐसे उंगली रख दूं तो आपको पता चल गया मैं बोल रहा हूँ कि आप चुप हो जाओ. ठीक है. सो कम्युनिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू योर एबिलिटी टू स्पीक. ओके. Further, if you go an opening address, the GTO will tell you that only 2 languages are permitted to be spoken in the SSBs. One is English and second is Hindi. Why no third language is permitted? Because there are different kinds of languages throughout the India. ठीक है. तो क्या हो जाता है कि
कोई साउथ से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, तो विच इज द कॉमन बेस और मीडियम ऑफ communication as far as conversation is concerned will be either English or हिंदी। ठीक है। अब खुदा ना खास्ता से फॉर एग्जांपल मैं जीटीओ हूँ और मेरे ग्रुप के अंदर सारे पंजाबी और दिल्ली के सारे आ गए हैं, ठीक है, और मुझे भी पंजाबी समझ में आती है और वो लोग पंजाबी बोलना शुरू कर देते हैं, मैं एज ए जीटीओ उनको कभी नहीं बोलूंगा कि तुम लोग पंजाबी में क्यों बोल रहे हो। I'm just giving you an offshoot example. Why? Is because what is my requirement? My requirement is whatever is being discussed in the group should be understood by me. And it should be understood by everybody in the group. Are both these requirements met? Yes or no? No, sir. मुझे पंजाबी समझ में आती है, वो 10 के 10 लड़के पंजाबी बोलना जानते हैं, वो सारे पंजाबी में डिस्कस करने, तो मुझे क्या दिक्कत होनी चाहिए? You didn't get you didn't know what they are saying. अरे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मुझे पंजाबी समझ में आती है। Yes sir, then it should not be a problem. मैं इंटरव्यू ऑब्जर्वर हूँ, मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है, आप साउथ से आए हो, आपको तमिल आती है, अब क्या करेंगे? मैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। सो इंग्लिश और हिंदी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट सवाल है। ये बहुत बड़ा मिसनोम है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, इसका मतलब मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। ये बहुत ही बड़ा एक डिसएडवांटेज है, और ये क्या कहते हैं, एक लोगों ने दिमाग में बैठा के रखा हुआ है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स is equivalent to ability to speak in English fluently and with an American accent, or with a British accent, or with some high society accent. That is called, so if a person able to speak like that, it implies that he has got a good communication skills. No, a communication skills first of all has got nothing to do with which language you speak. So as far as you have an ability of conversing and understanding people in English and Hindi, even if you are able to understand in English and you speak out in Hindi, there's nothing wrong about it. तो ये apprehension मत रखिए। But इतना तो English, because you otherwise you can't do the story, you can't do the word association test, GD, और स्टूडेंट सारे देश से आते हैं। ये प्लीज समझ लीजिए, आप साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आपको वर्ड आता है इंग्लिश में, सिचुएशन आती है इंग्लिश में लिखी, लेकिन उसका जवाब आप हिंदी में लिख सकते हैं। आप समझिए, क्योंकि आपको ओपनिंग एड्रेस में बताया जाता है कि आपको या अंग्रेजी बोलनी है या हिंदी बोलनी है, या दोनों मिक्स करके भी ये कर सकते हैं। तो ये गलतफहमी मत रखिए कि मेरे को अंग्रेजी में ही लिखना है। You can, because see, a basic understanding of English is mandatory, is because you and the person who is from English speaking area, he also has to have a basic understanding of Hindi. Yes sir. तो ये बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉकेड है जो मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में देखा है इन माय इंटरेक्शन, कि सर मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। मैं तो उसमें कौन सी मेरा अंग्रेजी में आती, तो आती ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मोदी जी एड्रेस करते हैं इंटरनेशनल फोरम में हिंदी में, तो आप किसकी मजाल है जो आपको बोल दे कि आपको अंग्रेजी नहीं आती इसलिए आपको क्लियर नहीं किया? Yes sir, absolutely. ठीक है। So nothing, you can write your responses in Hindi, you can speak in group discussion in Hindi, you can give your lecture in Hindi, कोई नहीं है, बट यू हैव टू एंश्योर कि जो आप बोल रहे हो दूसरों को समझ में आता है। हो सकता है लोगों को ना भी आए, हो सकता है आपके ग्रुप के अंदर 90% साउथ इंडियंस हैं,
और आप एक या दो नॉर्थ इंडियन फंस गए हो, अब वो 8 बंदों को इंग्लिश हिंदी नहीं आती है। तो ऐसी सिचुएशन को आप कैसे टैकल करते हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट से कि सर मेरे तो अंग्रेजी नहीं आती इसलिए, अब वो दैट इज व्हाट वी कॉल इट डायनामिक्स, हाउ इट हैपेंस एंड हाउ यू टैकल इट। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ा एब्सर्ड एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट जनरली नेवर हैपेंस, बट आई एम जस्ट टेलिंग एज अ फॉर लर्निंग आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल। ओके sir, so, while having GD yes, okay, yeah, GTO sir, related, while having GD we ask can GTO speak in related both. Yes sir, while having GD we can speak both languages, Hindi as well as English. आपको किसने बताया कि आपको सिर्फ अंग्रेजी बोलनी है? No sir, I am saying that नहीं, one point तो आप ऐसा क्यों सवाल लेके आ रहे हो, अपने आप को क्यों छुरा मार रहे हो? Why are you creating problems for yourself? okay Sir, we can use both the languages. You are, जब आप ओपनिंग एड्रेस में जाओगे आपको क्लियर कट ये सेंटेंस बताया जाएगा, you are free to communicate in either English or Hindi or a mix of both. अब इससे ज्यादा आपको एलोब्रेशन क्या है? I learn this thing. So जैसे आपने बताया, तो means we have to react according to situation. If we have English speaking students, so we can continue in English, and if we have Hindi speaking colleagues with us, so we can continue in Hindi. No, you have to communicate in a language in which you can make them understand. Simple. Now, if you can communicate, if you find that you can make them understand in English, speak English. If you think you can make them understand in Hindi, you speak in Hindi. If you think कि आप दोनों में नहीं समझा सकते, लेकिन दम सलाड खिल के समझा सकते हो या सिग्नल से बता सकते हो, it is your wish. So, can सर जैसे मैं बाकी लोगों से पूछ सकता हूँ कि वो किस में कंफर्टेबल है? वो आपकी मर्जी है, तुम अपना करो। यदि आप ग्रुप में हुए हैं, आप लोग आपको ग्रुप बताया जाएगा पहले दिन ही, जब आपका स्क्रीनिंग हो जाएगा तो आपको बताया जाएगा ये आपके ग्रुप्स हैं, आपको पता चलेगा मेरे ग्रुप में कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तो बाय द टाइम आप ग्रुप टास्क के लिए जाओगे आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि कौन किस भाषा के लिए कितने पानी में है या नहीं। तो वो समस्या आपको ये नहीं आएगी, जब आपका टास्क स्टार्ट होगा तब आपको ये समस्या कभी भी नहीं आएगी, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। Okay, we have last 5-10 minutes. Don't labor on this issue of language. You need communication skills. Yes. And in Army English has, fortunately, unfortunately, a very important role to play. Even as an officer, if you don't know English, you're gone. In an NDA, in IMA, anywhere. Firstly, SSB will not clear you. Not only Army, if you go for higher education, bachelor's, masters. So English is the language which binds the country today, and in forces, English is the language of at least the officer community. Even today, courses, even sailors, airmen, they speak very good English today. Even Jawans, many of them speak good English today. So, and that is what I told you in the beginning. I picked up my English after joining ND. So any questions now? Any questions sir, related yes, to GTO? GTO, sir. Task? Any questions? Yes, I have a question. Yes, sir. Yes. May I ask? Yes, sir. Sir, in lecture 8, suppose, sir, a candidate can select a general topic like physical fitness and sports, and another candidate, we have also another candidate, he can select a topic of current affairs. So, sir, according to you, sir, मतलब सर उसकी प्रायोरिटी सर हमारी जैसे फिजिकल फिटनेस है, तो सर जिसके पास जैसे कोई मतलब करंट अफेयर्स का जिसके पास टॉपिक होगा सर, मतलब क्या उसको ऐसा रहता है कि उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे या हमें कम मिलेंगे? सर व्हाट दे आर चेकिंग इन लेक्चर 8, माय क्वेश्चन इज दैट लाइक पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस और द क्वालिटी ऑफ ओके फाइन अंडरस्टूड ओके अनदर क्वेश्चन अदर क्वेश्चंस अबाउट GTO yes sir common answer. Sir, I have a question regarding the common task. Okay. So is it necessary that
a commander has to do the task by himself, or his subordinate has to do the work, the task given by GTO? Okay. Fine. Yeah. Ajay Somra asked, because this is the last set of questions. Pawan Yadav, पूछो कोई अगर Sir. GTO related है तो. Sir, I was asking that while doing half group task and progressive group task, where we have to remain, in front, in middle, or at the last? Where would you like to remain? Ajay? Yes, sir. Where would you like to remain? Sir, at first. तो फिर आप मुझे क्यों पूछ रहे हो कि फर्स्ट और लास्ट? नहीं सर, डाउट था सर, काफी बोलते हैं कि सर समटाइम्स क्या प्रॉब्लम होती है सर, जिन लोगों के पास आइडियाज नहीं होते वो पहले ही सर हेल्पिंग मटेरियल्स उठा के और निकलने लगते हैं ऑब्स्टेकल सॉल्व करने, एंड दोज स्टूडेंट्स हु हैव वेरी गुड आइडियाज दे आर लैगिंग बिहाइंड. सर व्हाट टू डू इन दैट केस सर, इन प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एंड इन हाफ ग्रुप टास्क सर? Okay, fine. Okay. Let me start. Let me ask 7A, Lasu. When you have you appeared for SSB? Yes, sir. I went last year, 34 SSB Allahabad. Oh, good. So when the task happened, I'm sure you would have been briefed by a GTO prior to the commencement of the command task. Am I right? Yes, sir. What was the briefing of the GTO? You remember? What do you remember out of his briefing? Sir, he before the GTO task started, he told us you can choose any two person whom you like, and then you have to complete the task within 7 minutes. Okay. वही बता. Yes, sir. उसने ये बताया कि टास्क आप करोगे या नहीं करोगे? No, sir. तो आपने क्यों पूछा मुझे कि टास्क मुझे करना है कि नहीं करना है? Sir, I have heard that somebody say that you have to do the task, and some people say that you have to just come and वो दोनों होता है, वो confuse हो जाता है. That was the reason. इसलिए कहते हैं ना, आप पूरे गांव में पूछने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. आपको जिसकी बात सुननी चाहिए वो आप लोग नहीं सुनते हैं, और वो है आपके जीटीओ की बात. हर एक टास्क के पहले जीटीओ आपको उस टास्क के बारे में एक्सप्लेन करता है, ठीक है, और वो आपको बताता है कि इस कमांड टास्क में ऐसा है कि आप अकेला करना चाहोगे तो भी आप इसको आप कर नहीं पाओगे, इसलिए आपको 2 साथी आपको मिलेंगे. लेकिन इस टास्क के अंदर वो साथी वही करेंगे जो आपको बताओगे. तो उस टास्क को कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आपने करना है. So unfortunately what happens, by the nomenclature of the task, people think that now my qualities, or I am being seen as a commander, कि मैं एज ए कमांडर कैसे काम करता हूं. तो वो कमांडर की तरह काम करना शुरू हो जाता है, ऑर्डर्स देने शुरू करता है, तुम ऐसे करो, और वो सोचता है कि मुझे कुछ नहीं करना है. तो एक गलत फहमी हो जाता है. ओके, यू शुड अंडरस्टैंड कि in GTO, the task is always a responsibility of all the people who are doing the task. If it is an individual task, तो एक ही बंदा होता है तो अकेला करता है. अब कमांड टास्क में आपको बोला है कि आप 2 लोगों के चुन सकते हो. So what happens is, you in that command task, why it is called command task and why you are nominated as a commander is because you are the person who will ensure that the task is completed in time. You will ensure, you have to think about the task, you have to plan about the task, you have to see how it is executed. So everything is supposed to be done by you, and that is why it is called a command task. बस यही एक अंडरस्टैंडिंग है. It no way tells you कि you as a commander, how would you like, if you like to sit, keep your hands on your back and give orders, it is your wish. If you want to involve yourself in the task, it is your wish. So if you have a team of 3, would you like to give command or would you like to work with your colleagues? Work together, sir, with the colleagues. Simple answer. So don't get carried away by the name of the task. The task has that name because once you are nominated as a commander, it is your responsibility to follow your rules, ensure the rules are followed. You have to ensure the task is completed in time.
and that is why you are nominated as a commander. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Now Yes, coming on to those lecturate and everything. वो lecturate का सवाल किसने पूछा था? पवन ने? नहीं, शुभम ने पूछा था lecturate में क्या देखते हैं? हाँ, शुभम. Yes, sir. अभी ये आपका सवाल वही है कि हमको चिंता होती है कि उसने ये टॉपिक पूछा तो उसको ज्यादा मार्क मिलेंगे या मुझे कम मार्क मिलेंगे. आपका फोकस मैंने क्या बताया, फंडामेंटल से गलत है. आपको अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की चिंता तो है, साथ साथ में दूसरों ने वो सब्जेक्ट ये सिलेक्ट किया तो उसको ज्यादा मिल जाएंगे तो मैं पीछे रह जाऊंगा, वो नेगेटिविटी. ठीक है, तो वंस योर फंडामेंटल्स गो रॉन्ग, योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग ऑन नेगेटिविटीज. इफ यू आर वर्किंग इन नेगेटिविटीज, यू कैनॉट बी सक्सेसफुल इन अ ग्रुप टास्क. Understood? I will try and answer his apprehension in a broad manner. Please remember that your selection or rejection is not based on how the other person performs or underperforms. Is that clear? दूसरा, जीटीओ के ऊपर कोई टेंशन नहीं होता है कि 10 लोग हैं तो 10 में से मुझे 2 ही पास करने हैं या 1 पास करना है, 8 पास करना है. सिमिलरली साइक को भी ये टेंशन नहीं होता है कि मेरे पास 15 लड़के का साइक टेस्ट आया तो मुझे 15 में से मुझे इतने ही पास करने हैं. सिमिलरली इवन इंटरव्यू ऑफिसर डजंट हैव दैट टेंशन. इफ एन ऑफिसर assessor feels that all the candidates whom I have assessed, they are fit to be recommended, all of them will be recommended. And if at any point in time he feels none of is suitable, he will say none recommended. The reason is it's a merit-based system. Understood? तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि उसको ज्यादा मार्क मिल जाएंगे, मुझे कम मार्क में, वो अच्छा करेगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा. ये टेंशन आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए. ठीक है. दूसरी बात आप करते हैं कि आपको जीटीओ जब ब्रीफिंग करता है तो आपको बताता है ऑल टेस्ट हैव गॉट. पहले मुझे बताइए कौन कौन जीटीओ टास्क एसएसबी अपीयर कर चुका है और जीटीओ टास्क किया हुआ है? कोई है? सर मैंने. Yes, sir. Yes, sir. तो जीटीओ जब आप जीटीओ डे आपका स्टार्ट होता है उससे पहले जीटीओ आपको एक ब्रीफिंग देता है, बताता है. तो उसमें क्या बताता है? Sir, all GTO tests would comprise of equal marks. तो फिर जी आपने कैसे बोल दिया कि ये कम है वो ज्यादा है? All tasks, इसको बताएगा, irrespective of the nature of the task and the duration of the task, all tasks are equally important and they carry equal marks. Marks, yes, sir. ठीक है. अब मार्क्स आपका कोई लेना देना है मार्क्स से? आपका लेना देना किससे है? टास्क से, परफॉर्मेंस से सर. तो टास्क चाहे आपका आउटडोर हो चाहे आपका इंडोर हो, टास्क आपका 40 मिनट का हो या 3 मिनट का हो. ये मत सोचना है लेक्चर 3 मिनट का है और मेरा पीजीटी 40 मिनट का है तो पीजीटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेक्चर कम इंपॉर्टेंट है. ये मत समझो. All tasks are equally important and therefore you have to pay equal time, energy and involvement throughout the task and all the tasks to the best of your capability. Consistency is the key in all tasks. Be consistent. In the entire Jain sir, sorry for disturbing sir. नहीं बोलो. हाँ सर, my name Rahul Singh Sahai sir. I am from basically Ranikhet Uttarakhand कुमाऊं सेंटर है जहाँ पे सर. तो सर 2.5 साल हो गया सर, अभी तक का हमने आर्मी की भर्ती दे रखी थी, उसका रिटर्न नहीं हो पा रहा और बेसिकली 2 साल से तो कोई भर्ती नहीं आ रही. इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है सर? देखिए ऑफिसर सिलेक्शन और भर्ती ये दोनों अलग अलग चीज है.
और will not answer this question because not relevant. Not हाँ, मेरे को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं उसको कोई जवाब नहीं दे सकता। किसी को भी जानकारी नहीं है उसकी, उस पे कर चुके हैं। What will request you Satyan now is to give a closing remarks कि basically इनके mind में कि GTO task के Sir, can I ask something? क्या तैयारी करें? Sir, please tell how to prepare GTO test series बस वही, at home, just tell them except for broadly GD and lecture it. कि इनको क्या तैयारी करनी चाहिए? लेक्चर का एक क्वेश्चन था। How can they prepare for GTO tasks in normal time before the SSB? That's what they would like to know. Okay. See, I'll start with a general statement about the SSB. मैं SSB गया था 1980 में, ठीक है। तो हमें तो ये पता ही नहीं था SSB क्या चीज। हम तो ट्रेन में बैठे, हम बड़े खुश हो गए कि स्कूल से 4-5 दिन की छुट्टी मिल गई, घूमेंगे। ट्रेन जर्नी पहुंचते पहुंचते 3 दिन लग गए, इलाहाबाद पहुंचे, हमें कुछ पता नहीं था क्या SSB है। उसने हमको समझा, हमें SSB अपीयर कर दिया, हम पास भी हो गए, मेडिकल भी हो गया, मेरिट में भी आ गए, ठीक है। एंड सेम आई एम श्योर वुड बी विद जनरल गौर ऑल्सो। अभी क्या हो गया, एक्सपोजर बहुत हो गया है, ठीक है। और अब ये क्या कहते हैं कि एक एप्रीहेंशन सा हो गया है कि यदि मैं कोचिंग नहीं लूंगा, ट्रेनिंग नहीं करूंगा, तो मैं पीछे रह जाऊंगा। मेरे को याद है जब हम स्कूल के अंदर होते थे तो वेकेशन में वो बच्चे ट्यूशन लेते थे जो क्लास में फेल होते या जिनके कम मार्क आते 30-35%। आज सिचुएशन चेंज हो गई है। आज जो 80-90% लेता है ना, वो ट्यूशन में जाता है। Am I right or wrong? Yes, sir. मैंने कभी ट्यूशन नहीं गया। Yes, sir. Yes, sir. So now the whole paradigm has changed and nobody wants to be left behind. So I don't blame you people. But then please understand, SSB is a different ball game. It's not an exam. Okay. So how can you prepare? And that is where we come to fundamentals. You have to prepare in a way. There are certain basics that you have to have. First is the knowledge. नॉलेज किस चीज का? यदि आप बीकॉम है, आप इंजीनियर है, आप बीए है, आप बीसीए है, एमसीए है, जो भी है, आप इंजीनियर है, यू शुड बी नॉलेजेबल, यू शुड नो योर फील्ड, यू शुड नो what is going to happen in future in your field, you should know the past of your field. So that is very, very important, your knowledge. Second, you have to increase your exposure. You have to increase your awareness. So how can you do it? You can do it by reading newspapers. You can do it by, interacting with people. You can do it by asking these questions. 5 होगा ना, basic questions. Why, where, which. Ask yourself, ये क्यों होता है? ये कैसे होता है? You have to know how the society functions, because SSB doesn't have a syllabus. Everything under the sun can be asked. So what is everything under the sun means? Everything which is under your influence, right from your birth, whatever you interacted with, all questions are related to that. When I say in terms of interview, and when I talk in terms of psych, वो मैंने आपको बता दिया. And when it comes to GTO, is basically what? You are basically, how is a GTO task different from interviewing and psych? Let me understand that understanding from you. Why GTO is different than interview and GTO psych test? Can you repeat the question once more? I'll ask them, how is a GTO task? Allow me to finish the question. How is the GTO testing different from interview and the psychological test? Sir, because GTO officer spend much time with us than psychologist and interviewing officer. So first in terms of time, okay. Second? Sir, group test is there, sir. And in interview, there is single test and psych test is our own selves only. In group testing, there is a group involvement. Okay.
So please understand, this is the main difference, that in group testing, you are appearing for test in conjunction with others. नहीं तो हम आपका ग्रुप टास्क ये कर देते हैं ना, चलो 10 कैंडिडेट को हर एक चीज अलग अलग क्यों नहीं कराते हैं? So the basic thing is, we wish to see as to how you interact with other team members who will have different opinion, who will have different background, who will have different exposure and different abilities. So in that environment of influx, how do you contribute? How do you manage? How do you adjust? How do you handle? How do you make sure that your things are done through, and whatever you call it? So ये ability कौन सिखा सकता है आपको? आप ये कहाँ से पढ़ के सीख सकते हैं, मुझे बताइए. हाँ जी. Only exposure and experience can help whether self-realization. इसको आपको कोई नहीं बता सकता. तो सेल्फ रियलाइजेशन ये आपको खुद आपको महसूस करना है, और ये आपको कहां से महसूस होगा? आपके वैल्यू सिस्टम से, आपकी अंडरस्टैंडिंग से, आपके एक्सपीरियंसेस से. आपको पता चलेगा मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो जो फंडामेंटल्स है, जो आपको एज ए, जब हम ब्रॉड बात करते हैं, मैं डिटेल्स में बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रॉड बात करते हैं, आपको किस पे ध्यान देना है? आपको अपना नॉलेज साउंड करना है, आपको अपना जनरल अवेयरनेस साउंड करना है, आपके पास अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स ठीक होने चाहिए. हवा में आप बात नहीं कर सकते. आपको एक एबिलिटी होनी चाहिए कि दूसरा जो बोल रहा है उसको, कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, उनके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन दे हैव द एबिलिटी ऑफ लिसनिंग टू अदर्स एंड पिक अप फ्रॉम देम एंड प्रेजेंट इन अ बेटर मैनर. No, we don't expect you to have 100% knowledge, but then you should also have ability to learn from others. ठीक है. तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे मैंने आपको फंडामेंटल्स के बाद बताया, आई वुड लाइक टू समराइज जस्ट मोर. फंडामेंटल्स का मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपने पे भरोसा रखिए, आप अपना फोकस फॉल से निकाल दीजिए. क्या देख रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये करूं, वो नहीं. आपका फोकस होना चाहिए, हाउ कैन आई पुट इन माई बेस्ट, हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ मोर नॉलेजेबल, हाउ कैन आई इंक्रीज माई नॉलेज, हाउ कैन आई इंक्रीज माई एक्सपोजर, हाउ कैन आई बी मोर इंक्विजिटिव, know about things. And if that happens, you are in a better position to interact with people, tell people, answer questions and things like that. Just a second, my laptop is on a low power. Just a second. So I think we have had almost 2 hours, 2-hour long session, very long session, very useful session. Alert, low battery. You've really opened up, given a different perspective altogether to this young crowd. We still have almost 400 on YouTube, and almost touched 90 here. So 500 to 600 people have enjoyed this amazing session. Hello. So Hello. yes. So Am I audible, sir? I think we'll call it a day now. We'll call it a day now. Sunday night. Can I ask a last question? I have a query, sir. Sir, from last 2 years, there is no notification of University Entry Scheme, UES. अरे यार, ये भर्ती दफ्तर नहीं है. वी आर नॉट भर्ती दफ्तर, वी आर नॉट आर्मी हेडक्वार्टर. हमें नहीं पता है, हम रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट में नहीं बैठते हैं, ना हमें एज पता है, ना क्वालिफिकेशन पता है. प्रिपेयर वो नोटिफिकेशन देखो, किसी मिनिस्टर को कुछ करो, हमें क्या पूछ रहे हो आप सवाल? हमें नहीं पता भाई. यूनिवर्सिटी Sir, also made a video. Last question from my no, side, we've had sir. enough questions. We will summarize it now. ठीक है. We have had enough questions now. ठीक है. अब इसको जो है, it is now my duty
to thank Kal Rathod to have taken out. He volunteered and he's taken out almost 2 precious hours and so much of detail. Really, for me also, many things were quite a revelation. With his experience. It was really a really amazing session. So, Kal Rathod, thank you very much on My behalf pleasure, of. We had when you see it, it would have touched 3 to 4,000 on YouTube by now, and of course, this my students, young bunch of who are always there with me. So I like to thank you on behalf of this entire class and everyone, and we look forward to more sessions from you.